और परसिस्टेंट की हम बात करें, स्टॉक भले ही आज थोड़ा सा शांत है, लेकिन ये जो चौथी तिमाही है वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। आप आईटी कंपनियों के लिए देखते हैं डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ और साथ ही साथ कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, तो वो आंकड़े पहले स्क्रीन पर आ जाएंगे। मुनाफा तो 6% बढ़ा, लेकिन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में आप गौर करें तो लगभग 3.5% तक का ग्रोथ देखने को मिला है रेवेन्यू में। एक्सपेक्टेशन 2 to 3% की थी, और डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में अगर आप ध्यान दें तो वहां पर आया है 3.8%, 86% तक की ग्रोथ। मार्जिन्स फ्लैट रहे। हमारे साथ कंपनी के आगे के आउटलुक पर बात करने के लिए कंपनी के ईडी और सीएफओ सुनील सप्रे जुड़ गए हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका। थोड़ा सा रेजिलिएंट क्वार्टर देखने को मिला है कंपेयर टू व्हाट द अदर्स, स्पेशली द बिग बॉयज हैव पोस्टेड। मुझे बताइए, ग्रोथ कहां से आई है और क्या ये सस्टेनेबल ग्रोथ है जो आपने इस क्वार्टर हासिल की है? तो ये जो क्वार्टर Q4 था, आपने देखा होगा कि सारे सेगमेंट्स में हमारा ग्रोथ हुआ है। बीएफएसआई भी ग्रो हुआ है, हेल्थ केयर लाइफ साइंसेस भी ग्रो हुआ है, और सॉफ्टवेयर हाईटेक जहां हमारा आईएसवी बिजनेस है उसमें भी ग्रोथ आई है। तो मार्केट में डेफिनेटली डिमांड आउटलुक, डिमांड एनवायरनमेंट इज वेरी चैलेंजिंग, वॉलेटाइल, अनसर्टनिटी बरकरार है बिकॉज ऑफ द होल इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन, recession, job losses or layoffs kind of news that is coming. So market is definitely tough, but we have been able to, work with the clients in various sectors. So while the growth numbers are definitely lower than the earlier quarters growth numbers that we used to see, and that is the reality of the macros, but within that we have a broad-based growth. That is what I would say. In terms of margins, we have been working for several quarters, to improve our revenue per client, which is a very key parameter to be able to work on improving the margins. So that is something which has helped us. और अगर आपने देखा होगा, because of the fact that we had recruited about 3,000 plus freshers sometime during first and second quarter of FY23. Now these freshers are actually getting into production. They are getting deployed on projects. Some of the freshers were also deployed on IP projects. And because of that, आपने देखा होगा, while utilization अगर आप देखेंगे तो थोड़ा परसेंटेज कम दिखेगा, क्योंकि entire pool of freshers has got added to billable talent pool. लेकिन despite growing, we have not added too much to the net headcount. And the reason is we are using that capacity now on actual projects. And when you do that, these costs were already sitting in the books, right? So that is the margin conversion that is helping us, despite the fact that this quarter did not have any currency benefit to our advantage. Dollar rupee was flat this quarter at about 82. मिस्टर सप्रे, बीएफएसआई द पेन पॉइंट बाकी इंडस्ट्री के लिए, बिग बॉयज के लिए, आपके लिए बीएफएसआई से क्या संकेत मिल रहे हैं? क्लाइंट्स आपको क्या कह रहे हैं? हेल्थ केयर की भी आपने मेंशन किया था, ओवरऑल सेगमेंटल परफॉर्मेंस के लिहाज से क्या स्थिति है? क्लाइंट्स की तरफ से क्या फीडबैक मिल रहा है? प्राइसिंग की सिचुएशन और डील्स की सिचुएशन क्या है? नहीं, एक तो आप अगर देखेंगे परसिस्टेंट का जो बीएफएसआई बिजनेस है, और उसको आप अगर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस ऐसे 3 पार्ट्स में अगर आप देखते हैं ना, तो हमारा जो बैंकिंग एक्सपोजर है, सो आवर बीएफएसआई टोटल बिजनेस इज अबाउट 32% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। उसमें से 1/3 इज अबाउट द बैंकिंग बिजनेस, which is where हम लोग जो सारा न्यूज फ्लो देख रहे हैं, रीजनल बैंक्स इन द यूएस और जनरली बैंकिंग क्राइसिस जो है वर्ल्ड ओवर, तो दैट इज इम्पैक्टिंग दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस, 1/3 of that business. So it is not a very broad-based type of an impact. The other 2 parts, that is financial services and insurance, are fairly resilient at this moment. Financial services is also the place जहाँ पे हमारा ISV बिजनेस है, जो हम फिनटेक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज या अकाउंटिंग, टैक्स रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनीज है जिसके लिए हम प्रोडक्ट इंजीनियरिंग का काम करते हैं,
So that is also included in that financial services. And that is about, say, total contribution from financial services is about 40-45% of the total BFSI business. And then the rest is in insurance, where, of course, it is generic macro related thing. There's no specific stress in insurance at the moment. So my take is that if we are able to stay engaged and see, there are a lot of, you can say, fintechs that are disrupting banking financial services space as a whole. So our opportunity is to work with these product companies, which are actually the channel which the banks are using, जिसकी वजह से वो एक different type of sales strategy, or they are opening new sales channels and so on, and trying to stay ahead while their normal net interest income based margins are under pressure for various reasons. So our play will be to use our product engineering skills and expertise in that area to work with Okay, I get that, sir. अगर एक आप हमें बता सके, लेकिन going forward, considering the macroeconomic environment, EU और USA business किस तरह से आता हुआ दिखाई देगा? क्या यहाँ पर आपको लग रहा है आपका ज्यादा ध्यान यूरोपियन मार्केट्स पर रहेगा? आपकी अप्रोच कैसी रहेगी? Volatility could be extended, but how are you going to play it? नहीं, दोनों मार्केट्स वॉलेटिलिटी तो दोनों जगह में है. Our concentration is US is much higher. It is almost between 78 to 80% of total revenues, and Europe is about 8-9% of the total revenues. So वहाँ पे थोड़ा सा बेस इफेक्ट है कि जब भी ग्रोथ आती है थोड़ी सी, तो it is on a lower base, so percentage is not that relevant in Europe. But having said that, we have been working on Europe for some time now. I mean, it's not something that Europe as a region has a higher impact of the war, the energy crisis, and so on. And every economy in Europe is, you can say, having its own challenges to deal with inflation and the way they are tackling the whole employment situation there. So far as I would say US is concerned, volatility is, or the way markets adjust is much faster. Europe takes a little longer time as compared to that. But it is not about that volatility is less at one place and more at other places. Markets are volatile all across. बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सप्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. स्पीड स्टॉक एकदम फ्लैट